आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरे नाम चंद्रकांत। वेलकमिंग टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल द ई लर्नर्स। डियर लर्नर्स, आज हम इंडियन केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन केमिस्ट्री का जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, उसका जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्कवरीज है, ठीक है ना, उसका जो जर्नी है फ्रॉम द पर्टिकुलर एंशिएंट पीरियड टू द पर्टिकुलर मॉडर्न एरा, एवरीथिंग वी आर जस्ट डिस्कसिंग इन दिस क्लास। अगर मैं बोलूँ इंडियन केमिस्ट्री इज द ओल्डेस्ट वन, सो आप बोलेगे सर कैसे हुआ? ऐसा नहीं कि मैं बोल दूंगा आप मान जाएंगे कि हाँ वो ओल्डेस्ट है। कैसे ओल्डेस्ट है उसको भी हम प्रूव करेंगे बाय गिविंग द पर्टिकुलर प्रूविंग्स। सो सिंपली द पर्टिकुलर इंडियन साइंस, इफ यू हैव टू गो फॉर दैट इज द डिस्कवरी ऑफ द इंडियन साइंस, नॉट ओनली द केमिस्ट्री, it is the oldest one. And if you have to go for the Vedas, Puranas, simply the Vedas, Puranas, it is the mostly, we have to say that is the ancient granthas. So all those things, that is what kind of discoveries we are getting, whatever the theses we are getting, almost it is what, as if you have to go for that is 5,000 years, or if you have to go for that is 6,000 years, everything it should be there. Okay, so as it should be, that is a long term period, it should be there, so it is oldest. So whatever the particular thing it should be there, we have to just prove it by the means of provings. Okay, so in this particular session we are just focusing the different types of discoveries, क्या क्या डिस्कवरी है, और जो पर्टिकुलर प्रीवियसली क्या क्या था उसमें, अभी जो पर्टिकुलर मतलब इन द फ्रंट क्या क्या हम पढ़ाई कर रहे हैं हमारा बुक में, और क्या क्या पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, एवरीथिंग वी हैव जस्ट डिस्कसिंग टुडे इन दिस पर्टिकुलर सेशन. सो लेट्स गो फॉर इट. इन एंशिएंट वेदा, द पर्टिकुलर टर्म केमिस्ट्री was called as Rasayan Shastra. That must be the meaning here. So, जो हमारा अनसेट वेदर्स में केमिस्ट्री को हम बोलते थे दैट इज द व्हाट, रसायन शास्त्र. अगर हम उसको डिफाइन करेंगे, दैट इज रसायन प्लस शास्त्र. शास्त्र मीन्स that is book here. Okay, so the particular book which is what defining regarding the particular different types of chemicals, that we have to say that is the rasayan shastra. Oh, simply if you have to just define it in the particular general manner, we have to also say that is the science of liquids or the science of chemicals, we have to say. Okay, उसको हम बोल सकते हैं that is what, science of liquids. अगर जो पर्टिकुलर रसायन शास्त्र है, रसायन शास्त्र को और एक नाम से हम बोल सकते हैं दैट इज द रसविद्या, और वी हैव टू से दैट इज द रसतंत्र, और वी हैव टू से दैट इज द रसक्रिया. हम उसको रसक्रिया हम बोल सकते हैं, रसक्रिया. सो अगर हम जो पर्टिकुलर रस का मतलब क्या होता है, दैट इज द केमिकल्स, that is the liquid. Simply that may be chemical, means that may be a particular liquid, any of the liquids here. Okay, so as it dealing with the particular chemistry means what, it is dealing with the for different types of chemicals. So simply liquid means must be a what particular chemical here. So अगर हम जो पर्टिकुलर केमिकल्स को लेके रिसर्च करेंगे, कहाँ पे हम रिसर्च करेंगे? यहाँ पे, दैट इज लेबोरेटरी में. ठीक है ना. सो अगर हम एंशिएंट पीरियड में जाएंगे, जो लेबोरेटरी को हम रसक्रियशाला बोलते थे. Now what is that? Rasakriya Sala, or we have to say that is Rasakriya Nagaram, where the particular different types of research of the what chemicals it should be takes place, जहाँ पर रिसर्च हुआ था, सर होता था जहाँ पर. सो उसको बोलेंगे क्या, दैट इज रसक्रिया नगरम. एंड सिंपली अगर जो पर्टिकुलर व्हाट टर्म है, मतलब रसायन, रसायन दो टर्म को लेके हुआ है. एक है रस प्लस आयन. वन इज द रस प्लस आयन. रस का मतलब क्या होता है? रस का मतलब है तुम्हारा दैट इज जूस, fruit or juice, we have to say fluid or juice. Okay, the particular term rasa means that is fluid or juice, and the particular ayana, the term ion, that is what coming from ayana means what, ayana means that is the way or the path, or simply you have to say that is the pathway. If we are just comprising this two term here, that is rasayan, rasa plus ayan, that is simple, we have to say the particular that is path of the juice.
हम उसको पाथ ऑफ द जूस, अगर दोनों को कंबाइन कर लेंगे यहाँ पे, ये क्या आएगा यहाँ पे, पाथवे ऑफ द जूस। ऑल्सो वी कैन से, हम बोल सकते हैं अगर कोई भी अलग डेफिनेशन से हिसाब से अगर बोलेंगे, सो ऑल्सो वी कैन से द पर्टिकुलर मीन्स बाय विच one get the excellence of rasa, one get the excellence of the rasa, that is called the rasayan. The technical term rasayan refers to the particular the means of obtaining the optimum nourishment to the particular dhatus. यहाँ पे अगर हम धातुस, धातुस का मतलब क्या है, मेटल्स, ठीक है ना, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम पढ़ते हैं, माइक्रो एलिमेंट, मैक्रो एलिमेंट्स, ठीक है ना। सो द सिंपली just like that, if you have to just go for particular dhatus means that is here, that is you have to say metals, ठीक है ना। जो रसायन में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल, नॉन मेटल, वो कंबाइन होकर क्या फॉर्मेशन करते हैं, हमारे कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं, कंपाउंड फॉर्मेशन करके उसका क्या होता है, रिएक्शंस होता है। सो ऑल दिस थिंग्स इट शुड बी टेक्सप्लेस हियर। सो यहाँ पे जो पर्टिकुलर मतलब केमिस्ट्री में एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में हमारा जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स है वो क्या करेंगे, यहाँ पे मिक्सअप होंगे, ठीक है ना। जो वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिक्सअप होंगे, मिक्सअप होके क्या फॉर्मेशन करेंगे, यहाँ पे एक कंपाउंड फॉर्मेशन करेंगे। अगर यहाँ पे देखोगे जो नेचर है एलिमेंट्स का, हम अभी उसको डिस्कशन कर रहे थे कि अगर जो भी यहाँ पे एलिमेंट्स आएगा, एलिमेंट का जो नेचर है वो टोटल डिफरेंट होगा कंपाउंड से, ठीक है ना। इफ यू जस्ट स्टडिंग द पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ द केमिस्ट्री by the modern science, we have to say that the chemistry is a branch of science which deals with the properties, composition, then structure of the particular substances. Which simply, if you have to just go for any of the matter here, what kind of transformation also it should be takes place in between them. Okay, that will be also what coming in the particular chemistry. And here in the chemistry, what happened? The whatever the chemical reactions it should be takes place in the chemical reactions. In certain chemical reactions, the energy it should be evolved. In certain chemical reaction, the energy it should be what? That is, we have to just providing the energies to it for its that is performing. So in the particular chemical reaction where the particular energy it should be implemented, जहाँ पर एनर्जी क्या होता है हम इंप्लीमेंट करते हैं, मतलब उसमें एनर्जी इन्वॉल्व करते हैं प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए और प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए, उसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे उसको? एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, जहां पर एनर्जीज इवॉल्व होता है, सिंपल। सो जहां पर एनर्जी क्या होता है, इवॉल्व होके आता है, मतलब एज ए बाई प्रोडक्ट आता है, दैट इज नोन एज एक्सोथर्मिक। तुम बोलोगे सर यहाँ पे थर्मिक क्यों है, आपने क्यों थर्मिक मेंशन किया एनर्जी को? सो यहाँ पे जब एनर्जी जाता है ना, वो हीट के फॉर्म में, यहाँ पे अगर इंप्लीमेंट करोगे हीट के फॉर्म में इंप्लीमेंटेड करोगे, सो अगर इवॉल्व भी होगा सो हीट के फॉर्म में इवॉल्व होगा। सो इसलिए यहाँ पे बोला कि दैट इज एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, ठीक है ना। अगर तुम मैटर का जो प्रॉपर्टीज है, सिंपल अगर कंपोजिशन में जाओगे, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड का क्या है, कंपोजिशन डिफरेंट है, एंड उसका जो नेचर है उसी हिसाब से उसका नेचर क्या होता है, वो डिफरेंट होता है, ठीक है ना। सो अगर तुम यहाँ पे एग्जाम्पल में लोगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इस दोनों को अगर मैं 1:8 रेशियो में क्या करूंगा, यहाँ पे मिक्स करूंगा, तो यहाँ पे वाटर फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। सो यहाँ पे देखो, जो हाइड्रोजन है, जो ऑक्सीजन है, ये दोनों का नेचर सेम है क्या? सेम नहीं है, ठीक है ना, उसका डिफरेंट डिफरेंट नेचर है। सो अगर यहाँ पे दोनों का क्या डिफरेंट डिफरेंट नेचर यहाँ पे मिल रहा है, अगर ये दोनों को हम कंबाइन करेंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, दोनों का नेचर सेम आएगा? मतलब इसमें से थोड़ा सा आएगा, उसमें से थोड़ा सा आएगा, ऐसे होगा? नहीं, वो टोटल चेंज आएगा। मतलब जो पर्टिकुलर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, वो दोनों को अगर मैं 1:8 रेशियो में, that the fixed ratio, each and every case is to get the water we have to just what mix the hydrogen oxygen in the ratio of 1:8, ठीक है ना। जब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 1:8 रेशियो में यहाँ पे मिक्सअप करूंगा, तो क्या मिलेगा, यहाँ पे वाटर मिलेगा। सो अगर यहाँ पे वाटर का नेचर देखूंगा, वो क्या करेगा, वाटर का नेचर क्या है, वो एक्सटिंग्विश करता है फायर को। हाइड्रोजन का नेचर क्या है, वो खुद
मतलब जलता है वो। ऑक्सीजन क्या करता है, वो जलने में हेल्प करता है, ठीक है ना। सो अगर यहाँ पे देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, वट एवर द नेचर, दैट इज ऑक्सीजन इज हेल्पिंग इन द पर्टिकुलर बॉन्डिंग, hydrogen that burn itself. So here the what is the nature of the water we are getting, that is total opposite of the hydrogen oxygen. That means here the water that is what extinguish the fire. That means both are the promoting the fire. The here the water that is extinguishing the fire here. Okay, so here what happened, the nature should be totally changed, ठीक है ना. And if you have to go for that is here we are getting for H2O, but whenever I'm just writing the H2O2 hydrogen peroxide here, the nature also be totally different. Okay, when the composition also changes, the nature also be changed. Okay, so here in the also we have to say in the definition, the chemistry is the scientific study of the particular properties and behavior of the what matters. Also, we have to say on that basis, the what we are studying the different types of properties, as it should be what dealing with the different. It is showing the different types of properties as well as it is showing the different types of behaviors. So we are studying here. Okay, so we are studying the different composition, we are studying the general what properties, whatever the, if you have to go for the structure basis, simple thing, whenever we have to just go for the water vapors. The water vapors, it should be what? In the gaseous form. Here you have to just look at here, it is in the gaseous form, water vapor. So whenever I'm just condensing the particular, that is water vapors, therefore they're forming the liquids. That means they're just coming to the liquid state. And whenever I just kept the particular liquid in the particular freezer, what? That will be coming to the particular solid state. That means the particular what water vapor that converting to the water, and the water it will be what transmitted to the particular solid form, that is ice cube. Okay, so here whenever we have to just go for the states of the matter, here what happened, the energy it should be lost by the particular what water vapor, okay, to get the liquid state. And here also the water it should be losing its temperature to what get the solidified form. Okay, so generally if you have to just go for the nature of this particular, or simply if you have to go for the properties of the particular water, it will be similar. But if you have to go for the states or particular physical form of all these particular, that means listen, you have to see that is water is there, water is there in the particular solid, water is there in the particular liquid, water is there in the gaseous form, water is there, but the states it should be different. That means in the water vapor, that is the gaseous form, it should be available. In the liquid, that is sorry water form, that is liquid state. If you have to go for that is ice cube, that is the solid state. That means the states are also be what different. So we have studying the structure of it. And if you have to go for that is composition, in the case of the composition, what happened in the case of solid, what happened, the particular particles are tightly or closely packed. Okay, the general bonding in between the particular what water molecules, it should be very higher, they're just tightly packed, where in the case of the liquids they're loosely packed, and in the gases they're far away from there. Okay, so on that basis the structure also it should be differ here. Okay, and if you have to go for the particular our ancient mythological book, आप सबको पता है हमारा जो बड़ी है पंच तत्व में मतलब प्रिपेयर हुआ है वो पंच तत्व का मतलब क्या है, पंच और 5 एलिमेंट्स जिसको बोलते हैं, और वी हैव टू से पंचभूत. अगर पंचभूत बोलेंगे तो क्या क्या आएगा उसमें से, उसमें फायर आएगा, एयर आएगा, अर्थ आएगा, वाटर आएगा एंड हेवन, 5 चीज आएगा इसमें. ये जो पंचभूत है ना, पंचभूत 5 सेंस ऑफ परसेप्शन जो है हमारा, टेस्ट, स्मेल, फील, देन विजन, साउंड, ठीक है ना, ये जो क्या है 5 सेंस ऑफ परसेप्शन है, इसके थ्रू क्या होता है हमारा कंसिडर किया जाता है, ठीक है ना. अगर हम जो सेंस ऑर्गन्स 5 सेंस ऑर्गन्स है हमारा, सेंस ऑर्गन्स क्या है, दैट इज nose for the taste, that is tongue is there for feeling, skin is there for vision, eyes, okay, then for the sound ears. So these are the 5 sense organs, ठीक है ना. so इसके थ्रू क्या होता है, ये जो पर्टिकुलर पंचभूत है ना, वो
जनरली हम बोल सकते हैं, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है ना। सो नेक्स्टली, द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियंस टू द केमिस्ट्री। अगर हम वैदिक जो पीरियड है, वैदिक पीरियड में जाएंगे, Vedic period has been classified into two distinct that is periods here. That is, we have to say early Vedic period and later Vedic period. Later Vedic period, that is the post Vedic period, we have to say. जो post Vedic period है, that is we have to say that is the boom age for the particular Indian chemistry. So why we are telling that is the boom age of the Indian chemistry? उसको क्यों बोलेंगे कि boom age है Indian chemistry का? क्योंकि ये जो पर्टिकुलर स्टेज में इंडियन केमिस्ट्री का ज़्यादातर क्या होता है, डेवलप हुआ था। मतलब उसी टाइम क्या मतलब जो कौटिल्य का अस्त्र शास्त्र आया था, देन न्याय संहिता, देन पर्टिकुलर वैश्विक संहिता, बारामेर का, देन चरक संहिता, देन वी आर गेटिंग द सुश्रुत संहिता, okay, all those things it would be just coming to the for particular existence, okay। वो जो डिस्कवरी था केमिस्ट्री का, द हायर स्टेज था इस पर्टिकुलर पोस्ट वैदिक पीरियड में। सो इसको बोलेंगे दैट इज द बूम एज, और द मोस्ट वी हैव टू से दैट इज गोल्डन एज ऑफ द वैदिक केमिस्ट्री। सो सिंपली अगर तुम अदर पीरियड्स में देखोगे तो अदर पीरियड्स में भी है, लेकिन इस जो पर्टिकुलर पोस्ट वैदिक पीरियड में है वो ज़्यादातर डेवलपमेंट्स हुआ था। सो अगर हम ट्रेसेस के बारे में देखेंगे कि इस जो टाइम में ट्रेसेस कहाँ कहाँ पे मिला था, हमारा जो पर्टिकुलर सिविलाइजेशन का मतलब केमिकल टेक्निक्स था प्रीवियसली, कहाँ कहाँ से हमें मिला है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स है इसमें, बट अगर बेस्ट एग्जांपल लेंगे दैट इज हड़प्पा सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो सिविलाइजेशन, ठीक है ना। उसी टाइम में जो मेटल्स का यूजेस, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स के यूजेस वहाँ पे मिला है, ठीक है ना। अब अगर देखेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन थर्ड मिलियन बीसी, millennium BC on this time for the particular हड़प्पा civilization it will takes place, ठीक है ना। ये जो पर्टिकुलर फॉर इम्यूनिट केमिस्ट्री, it will be came into particular existence by the for help of the particular Praful Chandra Ray. Okay, so for that only we have to say the Praful Chandra Ray or Praful Chandra Rai is the father of Indian chemistry. Okay, so also you have to say is the eminent chemist or father of Indian chemistry. He has a great contribution to the particular for that is developing the chemistry इन इंडिया। सो सिंपली अगर हम वैदिक स्टेज में देखेंगे, यहाँ पे वैदिक स्टेज का जो क्लासिफिकेशन हुआ है अकॉर्डिंग टू द पीरियड, दैट इज फोर डिस्टिंक्ट पीरियड है। हिस्ट्री के हिसाब से दो पीरियड में हम उसको पढ़ रहे हैं। सो अगर यहाँ पे देखेंगे केमिस्ट्री का, सो दैट इज फोर डिस्टिंक्ट स्टेज में उसको क्लासीफाई करेंगे। दैट इज अ प्री वैदिक पीरियड, ओके, देन दैट इज वैदिक और आयुर्वेदिक पीरियड, देन ट्रांजिशनल पीरियड, देन लास्ट वन इज द लैटर केमिकल पीरियड, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ेंगे दैट इज नागार्जुना, आचार्य नागार्जुना। आचार्य नागार्जुना was the first to use the mercury and khurfur. Khurfur means that is antimony. Okay, he was first to use the mercury and khurfur as a medicine. Okay, and also use all the particular what material for making the insoluble, um, making them particular for insoluble in the particular. He found generally five types of mercury. Okay, so if you have to go for that is example of the different types of mercury is here, that is red, gray, okay, whose are generally good, we have to say good mercuries. Then yellow, white, or the multicolored means that they pick a color, okay. So these are the bad qualities mercuries, okay. So simply all those particular whatever the metals at the time it should be discovered, he just used that one for the particular treatment, okay. And if you have to go for the use of the mercury, simply the mercury hydrogairum is Z, okay. It is available in the particular liquid form, you know it very well. So this particular mercury, it was
what used by the particular that Nagarjuna in the Sivalinga, okay, in the solid form. So there is a general process he should follow to make it solidified. Okay, so if you have to just go for the particular Siddha sect, the Siddha sect that held that Parad we have to say that is the Siva, okay, then Maika means that is Parvati, and here Gandhak is the Raja of the Parvati, okay, and simply we have to use that is Para, then Maika, then Gandhak, and certain other what basic things we have to use to make solidified the particular matter of Mercury, and after that what happened, the particular solidified form of the Mercury should be prepared, and here if you have to just go for the Sivalinga by this particular formula it will be just prepared, okay, and the worshipped or Parat Sivalinga was called Rasiswar, ठीक है ना. अगर अरबिक वर्ड अल्केमिस्ट हम जाएंगे और क्या लैटिन वर्ड केमिस्ट, ठीक है ना, एंड द मॉडर्न केमिस्ट्री आर द गिफ्ट ऑफ द नागार्जुना, ठीक है ना. दिस पर्टिकुलर वर्ड्स इट शुड बी द फॉर गिफ्ट ऑफ द नागार्जुना, and simply all these particular alchemists were in search of algae of life, okay, and simply whatever the particular general transformation of iron or the base metals into gold, okay, it will be takes place at that time, okay, that's the most advanced stage, okay, or we have to say that is a period they have to use the metal in the better ways. Then we have to go for the Maharshi Kannada. Maharshi Kannada, or we have to say the Acharya Kannada, was also known as the Kasyapa. Okay, he was the scientist at the time, or we have to say natural scientist, philosopher. Okay, who first discovered the atom or the paramanu. I think it will be on the 500 something BC. 500 or 400 something BC. So 500 or 400 something BC. Okay, it was just discovered the particular atom or the paramanu, give the concept of the paramanu, and in the 1808, okay, AD, we're getting the particular concept of atom by John Dalton. ठीक है ना, जॉन डाल्टन क्या है 1888 में जॉन डाल्टन आटम का जो कंसेप्ट है वो दिए थे. लेकिन अगर हम जाएंगे 500 वो दैट इज बिफोर 2500 ईयर्स, हमारा जो आचार्य कन्नड़ हैं और कणाद वी हैव टू ऑल्सो से दैट इज ही वाज जस्ट गिवन द पर्टिकुलर जनरल थीसिस ऑफ इट, ठीक है. नेक्स्ट में आते हैं हमारा द ग्रेटेस्ट अर्थशास्त्र, that is teacher, or we have to say that is the prime minister of the particular modern that is Emperor Chandragupta, okay, Maharshi Chanakya or Acharya Chanakya, has also at the time that do the many practices, okay, on the by taking the metal oats, and also he has just giving the different types of techniques for the particular purification of it and so on, okay. Next one, that is Maharshi Susruth, okay. Maharshi Susruth, we have to say he was the father of surgery. He is the father of surgery. Also, we have to say the father of brain surgery. In simply, father of surgery means he has a father of or for plastic surgery, that it will be takes place in the body, that is outer organs, and also he is the father of brain surgery, okay. And he also developed the different types of procedures for the particular surgeries, and also invented different types of surgical equipments, okay. And he also, that is by taking the different types of herbs, he also developed the anesthesia. Nowadays we are using the anesthesia for the word that is avoiding the pain, okay, during the operation. So before the timing also he has discovered the anesthesia, and also herbal wine, okay, to dull the
what sense of surgery, simple thing, but by the what that is a particular anesthesia, it will be the what herbal wine. uh, that one whenever it should be what implemented, जब उसको यूज़ किया जाता था, यूज़ करने के बाद क्या होता था, हमारा हमारा जो जो पार्ट में उसको यूज़ किया जाता था, उसी पार्ट में हमारा जो सेंस ऑफ रेस्पॉन्स है, वो वहाँ पे बंद हो, मतलब वी can't for determining the particular senses at that time, okay, on the particular place. Okay, so if you have to go for the Maharshi Susrut also, just like the Maharshi Susrut, Maharshi Charaka is also there, okay, who has the great contribution to the particular chemistry. So this is all about the thing of the discoveries which are given by the particular great Maharshi Acharya, okay, to the particular Indian society, as well as the particular to the particular world of science. So I hope all of you understood all these things, and that is my small step to discover the inner knowledge. I hope all of you understood, and by taking the part two, I have to come very quickly. Uh, the topic to be based on that particular second part of this Indian chemistry, that is the major chemical products that leads to the development of the chemistry in ancient India. And after that, the particular we are studying the discovery of the modern chemistry or involvement of the, that is development of the modern chemistry. Okay, so thank you for listening. If you want major chemical products that leads to the development of the chemistry in ancient India, it will come in the part 2. हम part 2 में इसको discussions करेंगे. So I hope all of you understood all these things. Thank you for watching. This is Chandrakant signing off.